the solution will be told by me. So the solution is you can use the facility of Google Forms. Now, what is Google Forms, bache? Google Forms is a very important member of the G Suite family. All of you must be knowing about Gmail. All of you must have made your accounts on Gmail. Then Google Hangouts is nothing but Google Meet. How you can, like we use Zoom, similarly you can use Google Meet to have, you can say, video interactions with the other parties. Google Slides is just like your PowerPoint slides. The only difference is it is made in the Google Drive. Then there is Google Sheets, which is your Microsoft Excel. Google Calendar, which helps coordinate all the things. Google Docs is like your Microsoft Word. And then it is Google Forms. And Google Forms is a very important tool through which we can collect information, we can take feedback, we can even mark attendance. Like every day I put a link in the group, so the attendance is collected. That is also done with the help of Google Forms. Now, what all we will be discussing today: creating a Google form, sharing or collaborating with your friends or with your teacher in charges in order to make the Google Forms. Then to gather information, putting your Google Forms on various social media platforms or sharing them through emails so that you can get adequate responses. And the last is learning to analyze the data that has been collected through the Google Forms. Now, how can we start with it? Creating of Google Forms. There are broadly two methods. There are two options of creating Google Forms. One is we can do it from the Google Drive, or secondly, we can search for Google Forms in the Google search engine and then proceed forward. Now, before we go into creating of Google Forms, you should know one thing: the different types of questions you can make using Google Forms. I'll share a link with you here. This is the Google form that will be opened up. Just a second, let me open that link again. There is some issue with the opening of that link. Now see, these are the different types of questions that you can make using Google Forms. First is multiple choice questions. We have 3 or 4 choices or maybe more, and the respondent has to answer any one of the suitable alternatives. Now, if you see, if I take choice A first and then I take choice B, automatically the highlighted cell has changed. So my option has changed. That means I can select only one alternative.
Second is short answer type questions. We use this when we have to ask for, let's say, name, or you want to ask, let's say, department, or maybe if you are to take the contact number of any of the persons. Who's playing with the screen, putting around here? Stop doing that. Whosoever is fiddling with the Zoom it, stop doing that. Ma'am, can you please remove annotation? Actually, this has been done by someone. I am not doing it. Someone has done it. No, there is one option in settings that no one can like write anything on screen. We just have to remove annotation. Okay. Thank you, Vachi. I have done that. But still someone had tried to do before I could make the changes. Okay. Next is checkbox type questions. In checkbox type questions, the advantage is I can have more than one alternative. See, I've clicked on 2. So that means both the options have to be selected. Next is drop down type questions. Now, if you see, there is this box with choose written here. If I click on it, I get the options yes, no, maybe. So I can select any. I selected no, so it is showing no. I select maybe, so it has started showing maybe. Next is I can have questions on the linear scale. Like Kushdeep ma'am discussed yesterday, that if I want to ask someone about a thing, how a person is feeling or anything like that, we can put it on the linear scale or the Likert scale. Now again, in this what happens, I can tick on only one option at a time. I cannot highlight more than one of the boxes. Next comes multiple choice grid. Now if you see, there is a matrix kind of a thing that has developed here. So in this what happens, I have to mark one answer in every row, but I can have more than one answer in every column. Say I marked for Snickers here, and if I want to click here, that does not go. But let's say for M&M, again I can click here. Thereby meaning 2 rows can have same answers, but 1 row cannot have 2 answers. Next is I can ask the applicant to fill the date and the time. So this is how I can use these Google Forms. So now let's try our hands. You have to be very attentive. Anywhere you feel that you have not understood or you have missed any step, you can please feel free to ask that again. Okay? Bache, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see the Google page? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now, if you see on the Google page, if I go to this corner, there are these 9 dots that are there. Can you see these 9 dots? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. These 9 dots. Can you see all of you? Yes, ma'am. Click on these 9 dots
and you will get this icon of Google Drive. You will get this icon of Google Drive. Click on this, a new window will open up. Now in this new window, here in the left hand side corner, you have this button of new. You have this button of new. Can you see that? The new Yes, button. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Now if you click on the new button, just a second. Click on more and then it shows you Google Forms. This step is okay to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Click on Google Forms and this window comes up. This window is where you are going to work. Now starting from this left hand side corner, it is written untitled form. See, it is written untitled form. I can put the name of my questionnaire, title of my questionnaire here. Let's say customer perception regarding traveling during COVID. Okay, this is the topic on which I want to carry out my study. So I have put this topic here. When you take your cursor from there, you will see automatically your topic has come here. I have not retyped it here. Automatically it has come from there to here. Thereby meaning that this is the title of the questionnaire that I want to create. Then next here it says form description. It says form description. You can write down the detail so that you can convince the respondent that they have to answer. Let's say you can write this questionnaire is a part of my study for the project on customer perception on traveling during COVID pandemic. Okay? Then you can tell them that the information will be used only for academic purpose and will not be shared with anyone. So like this, you can write a few things about why are you making this questionnaire and what do you want to study, so that the respondent is convinced and the respondent is willing to answer. Now, in the next column, if you see, it is written untitled question. From here, we are going to design the questionnaire. Before that, you should be clear what does this, what do these icons say? The plus icon here helps you in adding the next question. It helps in adding the next question. Then the second icon here, it helps in importing questions from an already created questionnaire. I'll show you the step. How do we do that? And this is creating titles for different sections. Then
This is for inserting a picture or an image. This is for inserting a video. And this last one is needed when I want to create certain sections. My questionnaire, let's say, is going to be very lengthy and I want to divide it into parts. So that I can do with the help of this last icon. So coming back to creating the questionnaire, when I click on untitled question, you see immediately the box design changes. Now, whenever I'm going to take any information from any respondent, I cannot throw my questions directly on the person. I first need to make the respondent comfortable, asking some basic questions, asking questions which he would generally let me know. And these questions, I tell you, they are not that they are very unimportant. There's a lot of hidden information that I can get from these questions. And these questions, they are under the heading of demographic profile of the respondent. Now, as Khushdeep ma'am told you, name is not required. So you may or may not ask name. Since here I'm just going to teach you how to create the questionnaire, I am taking the first question as name. You will see automatically this has gone to short answer. Because name would be something that one person would answer in 1 or 2 words. Because if the person is going to write full name, let's say the person is Shagun Ori. So Shagun Ori is going to be a short answer. Or Jasleen Kaur Pandev. 3 words, just that. You're not going to write a paragraph. So it's a short answer. And another thing is this icon. I have clicked it open because I wanted that my respondent should answer to this question. Or if I close it, that means it is not necessary to answer this question. We should generally keep it open and make it mandatory for the respondent to answer the question. Now, next, I want to add another question. So I will click on plus. The next window is automatically created. Now, let's say here I want to ask age. For age, because no one would like to give me the exact age, I can make it a multiple choice question. Now, let's say my questionnaire is going to deal with people who are above 25 years of age. So I can have the first grouping, 25 to 35 years. Next, I can have 35 to 40 years. Let me make a correction. I will keep this 35 and here 36 to 40 years. Then I can keep 41 to, let's say, 50 years. Then 51 to 75 years. Now, this basis on which I'm going to make these class intervals, I'll have to decide so that I can make them in such a manner that they are not overlapping, or there is some common characteristic among people in that particular age group. So depending upon my study, I will be making these class intervals for the age that the people have to respond to. Again, I've made it important or necessary to answer. For next, click again on plus. The next window opens up. I can ask them income levels.
And in the bracket, always specify, do you want per annum or per month? Again, it will depend on what you are studying. At times, I may require per month. Let's say if I have to ask expenditure levels, I have to compare with incomes. Then I will take monthly income and monthly expenditure. But when I'm talking of travel, I can take annual income. Again, I keep it multiple choice. And the first one, let's say I keep 3 to 5 lakhs. Next is 5 to 7 lakhs. Next is 7 to 10 lakhs. And last, I can leave open more than 10 lakhs. Again, making it compulsory to answer, I shift. Okay, now if I want to ask gender of the respondent, gender will be again multiple choice only, female and male. Or at times, if we are conducting a study on a very large sample, I may need to add prefer not to say. At times, transgenders may be included, or there could be certain other issues. But this is required only when my sample size is going to be very large. With you having a sample size of 100, we will go only with male and female. Next, I can ask them occupation. Now let's say for occupation, I want it to be a drop-down question. See, I've clicked on this. This list is displayed and I select drop-down. For I'll have to pull the options. Government service, private service, business, self-employed, or I can put professional. Again, categories would depend on what you are to study. Or last, I can put housewife, because some of my respondents would be in that group also. Again, click on plus. Okay, now when I have taken name of the person, age, income level, gender, occupation, what else do you think we can ask? Write your replies in the chat box. Excuse me. Yes. मैम एक्चुअली व्हाट इज मोर प्रेफरेबल कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चनर में डाल दें या फिर मल्टीपल क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करें? एक ही क्वेश्चनर बनेगा बच्चे, मल्टीपल क्वेश्चनर क्यों बनाओगे? मैम अगर बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने सर्वे के रिगार्डिंग दैट्स व्हाई। नहीं नहीं नहीं, एक ही क्वेश्चनर बनाना है until and unless it is कि आपको दो अलग अलग रिस्पोंडेंट्स लेने हो, कैटेगरीज ऑफ रिस्पोंडेंट्स. नाउ लेट्स से you want to study the performance appraisal in any organization, तो उसमें तुम एम्प्लॉइज का परसेप्शन भी लोगे, एम्प्लॉयर का परसेप्शन भी लोगे, तब अलग अलग क्वेश्चनर्स बनेंगे. बट अगर मैंने सिर्फ एम्प्लॉइज का परसेप्शन लेना है, आई विल नॉट मेक मेनी क्वेश्चनर्स, ओनली वन क्वेश्चनर विल बी रिक्वायर्ड. ओके, थैंक यू मैम. So put your answers in the chat box. Muskan has written traveling related questions. Bache, that would come up. I'm asking basic information, basic demographic information. I've taken name, age, income, gender, occupation, और कुछ पूछ सकते हैं?
I can see some responses. Contact number, email, education level. Yes, I can ask them education level. Because that is also going to influence the traveling habits. Now let's say I take undergraduate, graduate, post graduate, and I take professional, or maybe I may be required to take illiterate. Some topics may require me to have this information also. So education level. Another thing that is going to affect traveling habits, I can see some more. Nationality can also be asked. Marital status, yes, very good. Address, but address is not required. I can ask marital status. So again, making it multiple choice. Single, married, separated. Okay? So these could be a few options. Another thing I can ask is family size. Family size is also going to influence your traveling decision. So family size would be nuclear, joint family, or I could have more options if my topic demands. Like if I'm asking, let's say, income and expenditures of the families I'm studying, there I can have single, there I can have nuclear, just married, or the married with small kids, or joint family, and so on. Yes, Muskan, Jan, you were raising your hand. Muskan, do you want to ask something? मैम नो सॉरी गलती से हो गया. Okay. So this is the basic information that I can collect. Now I have to start with my questions. First question क्या होना चाहिए? Let me ask you only. Number of members, बच्चे family size जब मैंने लिया उसको आप modify कर सकते हो. Manya, you can modify family size only. Yes, ma'am, yes. Now, I have to ask questions about traveling. So how do you think I should go about it? How frequently you love to travel? Very good, very good. Regarding destination, where to go, destination ho gaya. Last when they traveled, month you can say before Corona. Okay. So my first question would be, do you love to travel? Okay. Pehle, making that person comfortable. Yes. No. At times. अब इसमें देखो, अगर किसी ने नो पे क्लिक कर दिया, क्वेश्चनेयर खत्म हो गया. Do you understand? बच्चे, if the person clicks on no, that he does not like to travel, उसके बाद क्वेश्चनेयर खत्म हो गया. So I will have to modify the way of asking the question. So I will make it very regularly, sometimes. ठीक है? या very regularly.
ऑफन ले लेते हैं, फिर हाँ जी, समवन वांट्स टू से समथिंग. मैम रेयरली वी कैन आस्क, लाइक बहुत रेयर जाते हो अगर. I'm putting that, बच्चे, I'm putting that. Very regularly, often, sometimes, rarely. अब देखो, अगर नो कह देते तो अगला क्वेश्चन खत्म था, बट अब कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना. अगर समटाइम्स कहता है या रेयरली कहता है, क्वेश्चनियर आगे तो चल सकता है, अदरवाइज क्वेश्चनियर वहीं रुक गया था. Got my point? Yes, ma'am. We can ask it on linear scale of 10. बच्चे 10 का तो नहीं बनेगा, हाँ 5 का बना सकते हो इजीली, पर शुरू में ही लीनियर स्केल के क्वेश्चंस डालोगे तो कई बार रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल नहीं होता. इसलिए हमेशा शुरू में क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए so that your respondent feels comfortable, उसको लगे कि हाँ मैंने आगे आंसर करना है. ठीक है, क्वेश्चनियर को हमने सेट भी उस हिसाब से करना होता है. तो ये पूछ लिया कि भाई तुम्हें ट्रैवल करना अच्छा लगता है. अब नेक्स्ट क्या पूछेंगे? Where do you like to travel? रमनीक, बजट पे भी आएंगे धीरे धीरे, नहीं तो उसको लगेगा इनकम मैम टैक्स. सीजन पूछ सकते हैं, सीजन. अभी अभी सब बताएंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे क्वेश्चनियर. Where do you like to travel? Within India, outside India. ठीक है, या एक ऑप्शन डाल देते हैं, ओनली रिलीजियस प्लेसेस, या आजकल प्रोफेशनल्स जो है वो ये भी कह सकते हैं ओनली बिजनेस रिलेटेड. ठीक हो गया ना? सो वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल? विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ओनली फॉर रिलीजियस प्लेसेस, या मैं सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल करता हूं. ओके, देन हमने ये पूछ लिया लव टू ट्रैवल एंड वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल. उसके बाद डू यू फील कोविड विल affect affect your future travel plans? ठीक. Now let me ask this on a linear scale. Some people may not be comfortable in giving passport details, but I am not asking passport details. I am not asking passport details. ठीक है, I am just asking where do they like to travel, outside India or within India. No other information I am taking. So do you feel COVID will affect your future travel plans? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हार्डली, एंड देखो उसने 1 to 5 का स्केल दिया है. इफ यू सी हियर, उसने 1 to 5 का स्केल दिया है. सो आई हैव टू पुट द फर्स्ट ऑप्शन एंड द फिफ्थ ऑप्शन. इफ आई वांट, आई कैन मेक दिस 7th option or the 6th option, any number that I want to give. Generally at your level I suggest only a 5-point scale, क्योंकि बच्चे उसके बाद एनालिसिस करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है. सो हार्डली, एंड यहाँ लिख दो टू अ लार्ज एक्सटेंट. ठीक,
Now see, when I press to the next, उसने उसको linear scale पे डाल दिया. Priyanka has given me another good option. With whom do you want to travel? Bache, we will come to that slowly and slowly. Do you feel COVID will affect your future plans? So I have taken this on a Likert scale. So now if the person says that yes, it will affect, now I can ask, why do you feel that you will Ishleen has given a question. Do you think there's a risk in traveling at this time? Okay, let me take that question first. Now I'll teach you here. I want to add a new question before this question that I'm typing. So what I will do, go back to this box and put a plus sign here. Now see, question is added in between. So I can ask here, do you feel there is a risk in traveling at this time? So again, answer क्या आएगा? Yes. Or in order to make it better, I can say definitely yes. To some extent, maybe, and last can be no risk. So I can study the mind of the respondent. Then why do you feel that you will not be able to travel? Now I want to make this, I will make it a multiple choice grid because there are n number of things that I want to ask. Travel restrictions is one. Flight availability is another. Then health risk is another. Cost will increase another. Then family constraints is another factor. I can take n number of factors. And in this column, I will write, let's say, strongly agree, and say, or I can write it as neutral, then disagree, and lastly, strongly disagree. This is how I have made it. Now, the moment I will click on the plus sign, you see how the format has changed. You will see how the format has changed. And if you will travel, what kind of travel it would be? Okay, one could be necessitated by business, or I am clubbing the business or job part, then family
requirements, then it would be for leisure or relaxation, or you can have even health related. Okay, so if you will travel, what kind of travel it will be? I am asking that the various reasons for which a person would travel. Yes, I am reading your responses in the chat box. Arshita, do you want to ask something? No, ma'am. Then please don't press that button of raising hand, all of you. Then how would you like to travel? Yeah. Again, multiple choice. By own car, by public transport, by company vehicle or hired vehicle, yeah, by air. So I've taken the option. How would you like to travel? Then, in what time do you feel you should be able to travel? Another 1 month, another 6 months, or say after 1 year, or it could be can't say. Okay. Now, bache, if you see from the start, majority of the questions that I am making it in multiple choice questions. Okay. So the best option that you will be using, or the most, you can say, used option would be multiple choice questions, or you can have questions on the linear scale like this, or you can have them on this multiple choice grid. These are the basic formats that you will be required to use. So you can go on adding n number of questions depending upon your topic. Now, as I told you, I can make sections using this last option. This last option that I told you, you can make options. Okay, so how do we use that? Now let me say I will put a question here. Which destination would you choose to travel? Okay, I have taken within India and I take outside India. Now, I want that if a person chooses within India, he should answer different set of questions, and if he chooses outside India, he should answer different set of questions. For that, now if you see, there are 3 arrows here, 3 dots here. Click on these dots, you get this option, go to section based on answer. So I will click that.
You see, immediately I start getting this. Continue to next section, continue to next section. So within India, I can write, just a second. For that, I'll have to first create. Let's say I create this. Now see, I've got this section 2 of 2. Okay. So I write it here within India. Then I create another section which says section 3 of 3, and I write outside India. Now you will see when I go back to this question and I click on this, continue to next section, it is now showing me these options. Go to section 2, go to section 3, which were not visible earlier. So for that, this I will put go to section 2. And for this, go to section 3. Is it clear to everyone till here? Or if you have any questions, you can. But any questions? Excuse me, ma'am. How many questions should be there? Arish, it will depend totally on the topic. How many questions should be there? But roughly, if I say 20 to 25 questions would be there if you have to get a good response. Hanji, Gitika? मैम मिनिमम क्वेश्चंस कितने होने चाहिए? अच्छा, मिनिमम का तो कोई वो है ही नहीं है. आपके क्वेश्चन टॉपिक के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि कितने क्वेश्चंस बनेंगे. एंड 15 क्वेश्चन से कम में आपका क्वेश्चनेयर ऐसा नहीं बन सकता कि आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल जाएं. सो अच्छे रिस्पॉन्सेज लेने के लिए 15 to 20 क्वेश्चंस चाहिए ही होते हैं. Jasleen is saying, please repeat the last step. Jasleen, do you want me to repeat what I did here or making of sections? मैम यस रिपीट इट अगेन, शुरू से बता दो. कहाँ से? सेक्शंस कैसे बनाए? हाँ जी हाँ जी. ओके. सेक्शंस बनाने के लिए बच्चे यहाँ पे ये बॉक्सेस हैं 2, ठीक है. इस पे क्लिक करोगे. जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो एक नया सेक्शन बन गया. ठीक है, ये एक नया सेक्शन बन गया. यहाँ आप इसको एक टाइटल दे दो. लेट्स से मैंने ABC दे दिया. ठीक. अब आपने वापस जाना है उस क्वेश्चन पे जहां पे आपने सेक्शंस बनाने हैं. ठीक है. लेट्स से हमने इस क्वेश्चन में सेक्शंस बनाने हैं, तो इसके ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे. ये ऑप्शन है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर्स. इसको क्लिक कर दो तो इमीडिएटली आपके पास आपकी विंडो में ये शो होगा. ये पहले नहीं शो हो रहा था. सो नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस. अब वो मुझे पूछेगा कि विद इन इंडिया जाना है तो कौन से सेक्शन पे जाऊं. तो मैंने विद इन इंडिया का कहाँ रखा है? सेक्शन 3, वो वहां चला गया. आउटसाइड इंडिया सेक्शन 4. क्लियर जसलीन? हाँ जी मैम, थैंक यू. अच्छा, मैंने ये एक सेक्शन तुम्हारे को दिखाने के लिए क्रिएट किया था. अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ. ठीक है. अब मेरे सेक्शन बन गए. सेकंड सेक्शन विद इन इंडिया, थर्ड सेक्शन आउटसाइड इंडिया. ठीक हो गया? हाँ जी मैम. Sherry is asking me that you created 2 different sections, then further study will be divided into 2, or it was only for that question. नहीं बच्चे, further study will also be divided. Further study में आपके number of respondents divide हो जाएंगे. Rumanchi, how will the drop down option work? बच्चे अभी मैं प्रीव्यू करके दिखाऊंगी, then you will come to know.
Now let me add certain questions to this within India section. Again, click on OK. Where would you like to travel in India? ठीक है? Let's say hill station or adventurous places, ठीक है, और beach area, or I can tell them religious places and so on. ये पूछ लिया मैंने. फिर अगला question. Let's say we ask, with whom would you like to travel? Friends, family, parents, alone. ठीक है कि मैंने जी अकेले जाना है. पेरेंट्स की जगह लेट्स से ऑप्शन कर देते हैं ग्रुप. Okay, so further I can set my questions in that manner. Now if a person says outside India, इसके questions डाल देते हैं. Where would you like to travel? ठीक है. A person says Dubai या Europe, USA. Someone says Sri Lanka or maybe Bali or Thailand, or n number of options I can give. Then again, with whom would you like to travel? अब देखोगे ऑप्शंस डिफरेंट हो रही है बट क्वेश्चन सेम चल रहे हैं. फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप, एलोन. ठीक है ना. सेक्शंस चेंज हो गए. एक विद इन इंडिया चला गया, एक आउटसाइड इंडिया चला गया, बट द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग they will remain the same. Now one thing more, जब मैंने sections बनाए हैं, जिन्होंने within India कर दिया, they should not answer for outside India. So I can make these questions as not required for everyone to answer. So in this manner, you can develop your questionnaire. यहाँ तक सबको समझ लग गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear to everyone? Now come to these things that are there. जो ये फर्स्ट आइकन है कलर पैलेट की तरह बना हुआ, this is customized theme. If you click on this, see, it will give you the option. You can change the theme color. You can change or you can put some image. आपने देखा होगा मैंने अटेंडेंस के लिए बीच में कुछ दिन कोई पिक्चर लगा के भेजा, कुछ दिन मैंने सिंपल भेज दिया. ऐसे ही भेजा था ना? Yes, ma'am. ठीक है. Now how do I put that picture? Go to this where it is written header. Go to choose image. ये देखो एक विंडो खुल गई, उसने आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखा दिए. ठीक है.
अब आपको ऑप्शंस दिखा दिए तो आपने अपनी पसंद से कुछ भी चूज करना है। अब मेरा टॉपिक है ट्रैवल, तो हम ट्रैवल का ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर मेरा कुछ वैसे है, हम ये वर्क एंड स्कूल का ऑप्शन ले लेते हैं, और आई कैन इवन अपलोड सम फोटोग्राफ्स। मेरा ट्रैवल टॉपिक है, मैंने ट्रैवल सिलेक्ट किया और उसमें से लेट्स से हमने ये ऑप्शन ले लिया, ठीक है। क्लिक करोगे इंसर्ट पे, देखो फोटो आ गई ना ऊपर। बच्चा पार्टी, डू यू सी दिस फोटोग्राफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका पर्पस क्या है, कोई बता सकता है? अट्रैक्टिव बन जाता है। Yes, your questionnaire will look attractive. Presentable also. Yes, yes. अब मेरे को इसका जो बैकग्राउंड कलर नहीं पसंद, ठीक है। What I can do, go to this theme color, क्लिक करो, यहाँ से अपनी पसंद का कोई कलर उसको देना है, जैसे मर्जी रंग बिरंगा बना लो। ये लो पर्पल कलर हो गया। फिर मुझे लगा पर्पल नहीं पसंद आया, ट्रैवल है, ब्लू होना चाहिए, कुछ पानी का कलर होना चाहिए, ठीक है। ये लो चेंज हो गया। फिर बैकग्राउंड कलर में फिर भी थोड़ी सी वेरिएशंस जैसे चाहे कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू वांट टू मेक योर क्वेश्चनर अट्रैक्टिव। ओके बच्चे, वो बच्चा पार्टी कुछ रिस्पॉन्स दो, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा आप देखो ये दूसरा आइकन, एक आंख बनी हुई है, there's an eye there. This is the preview button. मेरे को रोमांची बोल रही थी कि मैम ये कैसे वर्क करेंगी। Now if you click on preview, see this is the questionnaire that opens up. जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। नेम मैंने रखा था शॉर्ट आंसर टाइप, तो उसने वहां बस एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिया। एज मैंने मल्टीपल चॉइस बनाया था, उसने मुझे ऑप्शंस दे दी। इनकम अगेन आई हैड केप्ट इट मल्टीपल चॉइस, आई हैव बीन गिवन ऑप्शंस। Gender was multiple choice, so you can see. Now if you see this, sorry, occupation बच्चे मैंने ड्रॉप डाउन बनाया था। So what happens, ये चूज आ गया, यहाँ पे ये बॉक्स है जिसमें चूज है, एंड साइड पे ये एरो है। So what do I do? Click on this, ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए, मैं कुछ भी इसमें से सिलेक्ट कर लूं। नेक्स्ट इज एजुकेशन लेवल, आई कैन फिल वॉट एवर इज माई आंसर, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, यू सी कोई भी एक क्लिक होगा। मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, डू यू लव टू ट्रैवल वेरी रेगुलरली, वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल, लेट्स से आई क्लिक आउटसाइड इंडिया। Then, do you feel COVID will affect your future plans? Let's say I click on 4. कि मेरे को लग रहा है इफेक्ट तो होंगे बट कुछ एक्सटेंट तक होंगे। Then do you feel there's a risk in traveling at this time? Let's say I say maybe, yeah, to some extent. Why do you feel that you will not be able to travel? ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रांगली एग्री, आधी कंट्रीज ने तो बंद करी हुई है। फ्लाइट अवेलेबिलिटी अभी शुरू नहीं हुई, सो आई से अग्री। फॉर हेल्थ रिस्क, लेट्स से आई डिसएग्री कि कोई रिस्क ही नहीं है ट्रैवल करना। कॉस्ट विल इंक्रीज, आई एम न्यूट्रल, पहले जितने पैसे लगते थे अभी भी उतने ही लगेंगे। फैमिली कंस्ट्रेंट्स, अगेन आई एम न्यूट्रल। So if you see, I can put only one answer in one row, but I can have more than one answer in one
column because they are independent. Next, if you will travel, what kind of travel it would be? हम पक गए घर पे बैठे, so I wanted for leisure or relaxation. ठीक है? So I will click here. How would you like to travel? अब डिपेंड करता है कि मैंने अगला आंसर क्या देना है, कि मैंने इंडिया में ट्रैवल करना है कि बाहर ट्रैवल करना है. Because if I want to travel within India, I cannot go by my own car. So accordingly, my response will come. Let's say I take my own car. In what time do you feel you will be able to travel? I can't say. Which destination? Now see, if I click on outside India and I press next, I have not filled the responses, so just a second. Because I had made it mandatory, if you see. So it took me back there that you first complete it, only then you can go ahead. Now I have clicked outside India and next. Now, if you see, where has it taken me? Outside India. It did not take me to the questions within India. Is this step clear to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, if I go back and I click within India, मैंने option change कर लिया, and I click next. Now, where has it brought me? Within India. Okay. Yes, ma'am. This is how section-wise it will move. Where would you like to travel? Let's say I want to go to some beach place. I want to go with family. I click next. Now it has taken me to these questions, but since these do not apply to me, I can directly go and submit. Now if you see, it has not told me that I have to answer the questions which were for outside India. This point is very important when you frame the questionnaire. Because if you will make it mandatory to answer, then people who want to travel within India also, they will have to answer these questions. So you'll have to make them as optional. अब सबमिट हो गया, ठीक है? चलो अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चनेयर पे. Now do you see some change on this page? Write your answer in the chat box. Can you see some change on this page? Response is there, like you can Yes, yes, yes. Responses. मैंने क्वेश्चनर कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, सो द पर्सन हु हैड आस्क्ड मी, उसको पता लग जाएगा कि रिस्पॉन्स आ गया. इज दिस ओके? अब आपके पास बचे, आपने क्वेश्चनर बना लिया, पहले डिस्कस करते हैं उसको शेयर कैसे करोगे, ठीक है? और उससे पहले ये सेटिंग्स में जनरल, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर साइन इन, इसको आपने हमेशा क्लिक करना है. लिमिट टू 1 response so that one person can give only 1 answer. ये नहीं कि एक बंदा बार बार भरी जाए, फिर आपके पास डुप्लीकेशन हो जाएगी रिस्पॉन्सेस की, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा डेटा एनालिसिस करना. ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आपने उनको ये राइट्स देने हैं या नहीं देने, ये आपकी चॉइस है. देन फॉर प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार एंड ऑल, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कंफर्मेशन मैसेज है यहाँ पे कि जब आपने कंप्लीट कर लिया तो रिस्पोंडेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या मैसेज जाए. आई कैन राइट थैंक यू for
sparing your time and responding to my questionnaire. और मैंने इसको सेव कर दिया. ठीक. अब आप देखोगे, अगर मैं प्रीव्यू करूं, मैं दोबारा इसको भर भर के आपको दिखा देती हूँ. मेरे पास रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे. नाउ यू सी, मैंने जब सबमिट किया मेरे पास रिस्पॉन्स चेंज हो गया. पहले आ रहा था you can submit another response. Now because I have put the condition of only one response and मैंने वहाँ ये अपनी wordings लिख दी थी, thank you for sparing out time, so this has changed. So that is how the questionnaire will change. पहले क्या आ रहा था? Submit another response. Now going back, now if you see the number of responses has increased. Now I have 2 responses. अब बात ये आई कि शेयर कैसे करना है. उसके लिए बच्चे, this is the icon, send. Send पे क्लिक करोगे, ये विंडो खुल जाएगी. शेयर करने के 3 ऑप्शंस हैं. इन तीनों में से आपके लिए, for you only these 2 are the things which will be used. The first option, it says I can share it via email. मैंने किसी को मेल करना है तो यहाँ ईमेल टाइप करो. Let's say I type bbakcw@gmail.com. ठीक हो गया? And I can include form in email and send. मुझे ईमेल पहुंच जाएगी. सेकेंडली, आपने बहुत सारे लोगों को भेजना है, सबकी ईमेल आईडीज नहीं होंगी आपके पास. ठीक है, यहाँ मैंने पब्लिक से जनरल रिस्पॉन्सेज लेने हैं. व्हाट आई कैन डू, गो टू दिस सेकेंड ऑप्शन. आप देखोगे यहाँ पे एक लिंक आ गया. कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. ठीक है. नाउ इसको बहुत लंबा चौड़ा लिंक होता है, हमेशा डू दिस शॉर्टन URL. अब देखो ये छोटा सा हो गया, छोटा सा क्यूट सा लिंक हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. नाउ प्रेस ऑन कॉपी. कॉपी करके, नाउ लेट्स से आई हैव टू शेयर इट टू अ व्हाट्सएप ग्रुप. माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Okay. I have opened WhatsApp web on my laptop. And now let's say I want to put it to BBA research workshop. I go here. Wherever you type the message, go and paste. Okay. Leave it for a few seconds and you will see this comes, the heading comes. And now send it. All of you check the WhatsApp group. Have you got it or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is how I can share it with people. Similarly, I can even share this on the Facebook page. Anywhere you want, you can
share this. Okay, like see, I'll be sharing the attendance link with you just now. I've shortened the link, I've copied it, and now I'll put it in your chat box. I go to the chat box, I put it here. And the moment I press enter, it is reflected. Can you see it in the chat box? Yes, ma'am. Okay, so this is how you can share the link. अब आपने शेयर कर दिया, शेयर करने के बाद रिस्पॉन्सेज आ गए, उसका क्या करना है? I will click on responses. Now, can you see this? Yes, ma'am. आपके ये पाई चार्ट्स ऑटोमेटिकली बन के आ गए. बच्चा बाटी Yes, ma'am. है Yes, ना? ma'am. और जहां मैंने ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड बनाया था, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री करके, वहां पे उसने ये मुझे बार डायग्राम बना दी. तुम्हारा काम एनालिसिस का ऑटोमेटिकली हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल फॉर्म. ओके, एनालिसिस चैप्टर सीधा यहां से बन जाता है, पर ये नहीं कि यहां से कॉपी पेस्ट कर लिया. आपको एनालिसिस के लिए हर टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी. अब इसको डाउनलोड कैसे करोगे ना रिस्पॉन्सेस को? उसके लिए देखो ये दो आइकन्स हैं. जब आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे, वो आपको पूछेगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, और उसका टाइटल ये, क्लिक ऑन क्रिएट. नाउ कैन यू सी व्हाट हैज कम अप? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. हुआ? ये क्या बना? बच्चा बाटी ये क्या बन गया? Ma'am, Spreadsheet. spreadsheet. एक्सेल की स्प्रेडशीट. सारा डेटा आ गया ना? So your analysis will become very easy with this. इस स्प्रेडशीट को आप फाइल में जाके डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में. ठीक है, या ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया, मैं डायरेक्टली आई कैन डाउनलोड द रिस्पॉन्सेज. आपको यहाँ पे डाउनलोड करके मुश्किल होगा बिकॉज ये CSV फॉर्मेट देगा, तो तुम इसमें घूम जाओगे. I would suggest click on this plus sign, go to the spreadsheet, go to file, and then download it in Excel format. You will get all your data easily. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is regarding your creating questionnaire using Google Forms. Now, any questions you have? Because that's it from my side. If you want to ask any questions, you can ask. Excuse me, ma'am. Yes. मैम एक्चुअली आई वांट टू नो, जैसे वो ड्रॉप डाउन मतलब ड्रॉप डाउन वाला था, उसमें हाँ जी. अगर हम अदर्स वाला ऑप्शन ऐड करें तो फिर वो कैसे होगा, मतलब वो वर्क करेगा? ये देखो ये लास्ट है ना, मैंने यहाँ टाइप कर दिया अदर्स. ठीक है, ओके ये क्या जब आप प्रीव्यू करोगे, वो क्योंकि मैंने फिट किया हुआ था ओनली 1 रिस्पॉन्स, सो उसने मुझे कहा यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड अगेन, सो यू कैन ट्राई दिस. आपको ये अदर्स शो हो जाएगा. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम. एनी अदर क्वेश्चन? Excuse me, Pooja. Yes, ma'am. Good morning. Good afternoon, Kushdeep, ma'am.
Very, very good afternoon, Pooja. Indeed, it was a wonderful session. Thank Again, you, it was a ma'am. good learning experience for me. Will you please explain how to get spreadsheet? How to get spreadsheet? Just a second, ma'am. I'll do that. Let me share my screen again. Now, see, this is the questionnaire that I get. Yeah. I Yes. click on responses. When I click on responses, this responses page comes up. Ma'am, there is this green icon here. Okay. 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 From the screen. This is the sign of a spreadsheet. So if you Right. click on this, this automatically comes. Okay. We don't need to do anything much. Thank you. Thank you, Pooja. My Thank you. pleasure, ma'am. My pleasure. Ishita has tried to fill the form. Good, Ishita. Good afternoon, ma'am. Yes, Banpriya. I have one question. Like when we give some response, so we get a mail, like confirmation mail, like thank you for responding to Yes, this mail, and we yes. get some link. Yeah. So how can we do that? Like how can Okay, we for that, what you will do is, okay, when you go to the questionnaire, go to settings, presentation. Okay. Acha, for that, the first thing is you'll have to click on this, collect email address, and also click response receipts always. Okay. So the email address you've collected and response receipts you have clicked, automatically the response will go to the person that's thank you for responding. Am I clear, Banpriya? Oh, yes, ma'am. Okay, thank you. Okay. Anything else you want to know? Now see, Ishita replied and this diagram's constitution changed. See, earlier there were only 2 colors visible. Now you're having 3 colors here. That is how it will change. All of you, you can see the change? Yes, ma'am. Okay, as the responses will come in, keep coming, these will keep on automatically changing. Anything else you want to ask? मैम Yes. मैम जैसे जब हम शेयर करते हैं अपना ये गूगल अपना क्वेश्चनेयर तो ये हाँ जी। उन ऑडियंस के पास भी जा सकता है जो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है हाँ तो जी बच्चे। अगर हम वो वाला एज ग्रुप भी ऐड कर दें और उसके बाद अगर वो उस एज ग्रुप में क्लिक करें तो बाद में उनको ये शो हो कि ये आपके लिए नहीं अवेलेबल, तो ऐसा कुछ होता है? वो मुश्किल हो जाएगा बच्चे आपको सेट करना। ओके मैम। पर कर सकते हो, कैसे करोगे मैं बता देती हूँ। इसमें गए, यहाँ पे गए, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन द आंसर, ठीक है। यस मैम। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया अदर एज ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म, ये देखा आपने? ओके मैम, ओके। ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई भी रेस्पोंडेंट इस एज ग्रुप में नहीं है, वो अदर पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उससे बाहर निकलेगा फॉर्म सबमिट करके। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? तो आज एक होमवर्क दे दें आप सबको। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मान्या। मैम हम वो वाले क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो मैंडेटरी है और नॉन मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं? लाइक जिनमें मैंडेटरी में तो स्टार होता है, जो नॉन मैंडेटरी होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता, हाँ तो जी वो कैसे पता लगेगा? बच्चे देखो, ये मैंने नेम मैंडेटरी किया तो मैंने ये रिक्वायर्ड वाला जो है इसको ओपन करा हुआ है। अगर मुझे मैंडेटरी नहीं चाहिए मैं इसको क्लोज कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके।
Anji, Ma'am, anything else? apart from Google Forms, do we have any other site? Like there is some Bitly or something like that. There are many options, but then this is easier for you Okay. because your responses will be automatically you can say gathered, and an analysis part will also be done, which is not easy in Bitly. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes. Ma'am, these on the right side, the tools are given. What is the role of the third tool? Like T, there is given. For T, okay, I'll click it here. I can give a title. Let's say, just a second. I put it here and then I put a T. Okay, I have given the demographic profile. So this part I am going to take the demographic profile of the respondent. That's it. उसके Okay, अलावा उसका कोई खास जो है यूज नहीं है. okay, ma'am. Thank you. अच्छा, एक और चीज सिखाती हूँ. मान लो आपने एक क्वेश्चन टाइप कर लिया, बाद में आपको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, या मैंने ये गलत लिख दिया, तो ये डस्टबिन वाले उस पर क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा. मुझे क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज करना है. लेट्स से मुझे जेंडर जो है वो एज के बाद चाहिए, इनकम बाद में. इफ यू सी देयर आर 6 डॉट्स हियर. Yes, ma'am. ये 6 डॉट्स दिख रहे हैं. Yes, अपना ma'am. सर इस पे लेके जाओ, इसको ड्रैग कर दो. एज के बाद जेंडर आ गया, फिर इनकम आ गया. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीथिंग एल्स? एक्सक्यूज मी मैम. यस जसलीन. मैम मेरे को पूछना था कि वो अपने ऑप्शन कैसे क्रिएट किए स्ट्रांगली एग्री वाली. स्ट्रांगली एग्री वाली, हाँ जी मैम. ये वाली, ठीक है. हाँ जी हाँ जी. अच्छा, चलो यहाँ एक नया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं. ऐड किया, ये सेक्शन आ गया. हाँ लेट्स से माय जी क्वेश्चन मैम. इज आउट, मतलब ये अब हम ट्रैवल से बाहर आ गए. हाउ डिड यू लाइक द वर्कशॉप? ठीक है. अब आपने क्या करना है, तो ये बॉक्स है, इसमें आपने मल्टीपल चॉइस ग्रिड लेना है ऑप्शन. ये ध्यान रखना है, चॉइस हैज टू बी मल्टीपल चॉइस ग्रिड. रोज ओके. वाइज मुझे क्या चाहिए. रो में लेट्स से मैंने लिख दिया कंटेंट, फिर टीचर रिस्पॉन्स टू क्वेरीज, ठीक है. फिर मैंने लिख दिया टाइमिंग, देन यूजेबिलिटी, है ना. या फिर मैंने लिख दिया द प्लेटफॉर्म यूज्ड, ठीक है. अब कॉलम वाइज मुझे क्या चाहिए. लेट्स से आई राइट वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, ठीक है. अब जैसे ही मैंने प्लस साइन क्लिक किया, अब देखो इसका ये चेंज हो गया. हाँ जी हाँ जी. क्लियर. हाँ जी मैम. तो आज का एक होमवर्क मिल रहा है अब तुम सबको. हर कोई एक क्वेश्चनेयर क्रिएट करेगा जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, ताकि सब लोग उस पर रिप्लाई कर सके. इज दैट ओके? कुछ भी ओके मैम. टॉपिक ले लो. आई एम नॉट सेइंग अपना प्रोजेक्ट टॉपिक, कुछ भी टॉपिक लो, एक क्वेश्चनेयर क्रिएट करो और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो. ठीक है. Excuse me, ma'am. यस.
मैम वो जो आपने टेक्स्ट वाला ऑप्शन बताया था जिसमें आपने डेमोग्राफिक लिखा हुआ था, हाँ जी, तो उसमें हमें उन्होंने साइट पे ये नहीं शो किया कि हमने कौन सा मेथड लेना है स्लाइड। क्योंकि वहां कुछ इंफॉर्मेशन तो भरनी नहीं किसी ने। आप देखो वहां किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं भरनी। मैंने यहाँ जाके ये सॉरी ये मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। यस मैम। तो सिर्फ मैंने एक टाइटल देना है, जैसे चैप्टर का टाइटल होता है ना, ओके दिस इज जस्ट लाइक अ टाइटल। इसका कहीं कोई खास यूज नहीं है। ओके मैम। हाँ, अभी मैंने तुम्हें गूगल फॉर्म्स उतना सिखाया है जितना तुम्हें अपना रिसर्च करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आई शो यू अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स आल्सो यू कैन डू। पहले अभी इतना सीखो। तो आज का होमवर्क है that all of you will make a questionnaire and share it in the in the WhatsApp group so that everyone can respond and then you will check your responses. Okay.